मैन्युफैक्चर क्या है इसका फिर? इसमें लिखा है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड बाय कश्मीर जेंजी प्राइवेट लिमिटेड, ये है हमारी कंपनी। इसमें डेट लिखी हुई है कौन सी? Thank you so much. मेरा नाम तारिक जरगर है। यहाँ एग्जीबिशन जो है बेसिकली हमारी जो क्राफ्ट्स है, कश्मीर क्राफ्ट्स उसको हमने थोड़े से इम्प्रूवमेंट्स लाए हैं, एनहेंसमेंट्स किए हैं, कुछ मटेरियल्स का फ्यूजन किया हुआ है, एक थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन की है while keeping it authentic as much as possible. तो first lot of prototyping was completed and now that's on display. ये सारे यहाँ पे प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स है। देखिए प्रोसेस थोड़ा सा हमने मटेरियल तो वही है जो यहाँ पे सदियों से हमारा ट्रेडिशनल यूज़ होता है, चाहे वो विलो विकर हो, कॉपर हो, वॉलनट वुड हो, सारे वही मटेरियल्स हैं। प्रोसेस लिटिल बिट डिफरेंट हमने अप्रोच दिया हुआ है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी प्रोटोटाइप फर्स्ट ऑन 3D प्रिंटर्स। पहले कैड में ड्राइंग बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं, फिर 3D प्रिंट्स निकालते हैं मिनिएचर साइज़ के। वंस वी फिगर आउट दैट इफ देयर इज एनी इंजीनियरिंग नीड ऑफ इन द प्रोडक्ट, तो वंस दैट्स फाइनलाइज तो then we go for the prototyping. So we have a workshop जहाँ पे हम prototyping करते हैं before going for production. Family background नहीं है हमारा arts and crafts का at all, and I've been in this for the last 2.5 years almost. So basically what we have achieved during this time is basically the prototyping, the first lot of prototyping of the products, and I think market reaction देख के हमें लगा कि we have been doing the right thing and there's very good acceptance. हमारे साथ ही हमने एक online portal develop किया इसके लिए for the marketing purpose, kashmirs.com. So we've started seeing orders coming slowly. And of course I encourage my kids, I encourage everyone in Kashmir, if they are interested in this, there's a lot of scope in this. I mean, our economies have been, we have survived for a long time with this Kashmir art, so why not? And there should be, I mean, many times we hear कि बच्चे नहीं मानते आज हमें ये काम करने के लिए, but once they see, I've seen so many youngsters coming here and really getting excited because things have changed. We shouldn't feel shy, even if it's a carpentry is a part of engineering, and when we incorporate science into it, that's some kind of technology into it, जिसका बहुत ही ज़्यादा scope है. This is like any other profession, and I think पूरी दुनिया में इसकी इज़्ज़त है. People do recognize it, and craftsmen, crafts की बहुत इज़्ज़त है. So why not? And if my kids choose to, I'll be more than happy. Governments are always bigger than individuals, and there has been like we have been given this space for handicrafts and handloom department, and I've seen a couple of artists before this as well here. I think they've kept it open, and there are so many initiatives which I've never heard before that government is taking, and people should actually explore this, and because this is meant to be for the people.
but one has to move, you know, you have to move, you have to explore yourself. Government can facilitate it. Basically आपको ही करना है. मैं तो कहता हूँ मतलब there's an element of government job, we wait for government jobs, there's nothing wrong in that, but while you wait for that, if this interests you, give it a try. I mean, हम encourage कर रहे हैं सबको, आप आए हमारे पास, आप देख लीजिए what's possible in this, and फिर आपके अपने ख्याल लगाइए इसमें, and you can इसको next level पे ले सकते हैं. I mean, it's not that we have all the ideas. I mean, you may just, you know, take the ideas and enhance and innovate कर सकते हैं इसके and add some product line. Like आप छोटी चीज़ भी यहाँ पे उठाइए, मेरा यकीन है, and I can prove that scientifically that these things in itself, each one can be a strategic business unit जिस पे आप एक अच्छा खासा business बना सकते हैं. And I've seen people doing this online. So yes, give it a try.